So just now 2 buffaloes just passed by. So for some reasons I just felt they were, they looked really different. Then I realized they are not buffaloes, they were bisons. So just on the way जब मैं आ रहा था तो चेक पोस्ट में they stopped me कि यार you're not allowed, there are a lot of bisons and boars that roam around. So थोड़ा सा वहाँ के गार्ड को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके I entered. Otherwise they generally don't allow, especially lone riders, to enter the ghat section. तो पहली बार बाइसन को इतने नज़दीक से मैंने देखा, वो भी वाइल्ड में. ईशा योगा सेंटर से आई स्टार्टेड एट 8:30. फिर अराउंड 10 बजे मैं एक ढाबे में रुका डिनर के लिए. डिनर थोड़ा सा हेवी हो गया लास्ट आधे घंटे से. लाइक आई एम फीलिंग काइंड ऑफ ड्राउजी और इट इज़ लाइक 12 o'clock राइट नाउ. और रूम है लाइक अनदर 3.5 hours. सो पहुँचते तो 4 बज जाएगा. सो आई हैव टू बी रियली अलर्ट नाउ, बिकॉज आई एम द ओनली राइडर अराउंड. हम पहुंच गए अपने होटल का रूम, होम स्टे का रूम इनफैक्ट. तो अभी बज रहे हैं 4:30 मॉर्निंग के. वो लास्ट हाफ एन आवर का राइड तो क्या बोलूँ मैं तो सोते सोते गाड़ी चलाया. आप बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज इवन ड्रीमिंग एट सम पॉइंट्स. आई मीन इट वॉज हाई रिस्क राइड. आई थिंक मैं फिर से कभी ये ऐसा रिस्क कभी नहीं लूँगा. रीच हुआ अभी तो कुछ करने के थोड़ा फ्रेशन अप होके जस्ट जंप आउट ऑफ द बेड. तो एक 5-6 घंटे का एक ज़बरदस्त नींद के बाद विल सी. कल कब तक तो कुछ प्लान बना नहीं है. विल सी व्हाट आर द प्लेसेस टू विजिट इन कोडाईकनाल. उसके हिसाब से विल प्लान द शेड्यूल. सो गुड नाइट. गुड मॉर्निंग. सो अभी बज रहे 11:30. काफ़ी लेट हो गया. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 9-9:30 उठ जाऊँगा, बट नहीं हुआ. सो ये हमारे होटल के बालकनी से व्यू जो आप पीछे देख रहे हैं. व्यू इज़ रियली नाइस. द वेदर इज़ रियली प्लेजेंट और क्लाउड्स एकदम लो है. दे कविंग द माउंटेन्स. ब्यूटीफुल व्यू. सो आज का प्लान अभी तक प्रॉपरली शेड्यूल नहीं किया है. सो आई जस्ट हैव a cup of coffee. उसके बाद I'll schedule it. Probably by 12:15 I'll start to visit places here. तो देखेंगे जितना हो सके उतना कवर करूँगा. And then yeah, that is for now. या बारिश का टाइमिंग भी क्या परफेक्ट है. जस्ट व्हेन आई एम अबाउट टू स्टार्ट इन स्टार्ट्स टू ड्रिजल. ऑलरेडी चला आधा दिन निकल गया है एंड इट स्टार्ट्स टू रेन नाउ. द लास्ट few kilometers towards the room, the roads are like horrible. अरे यार, the rain is getting heavier. So अभी का प्लान है that I'll be going to Mannavanur Lake. That is about like 35 kilometers from here. और सुना है काफ़ी सुंदर जगह है एंड थोड़ा कम एक्सप्लोर्ड भी है. सो राइट प्लेस. और ऑन द वे मैं एक मुरुगन टेम्पल भी है. थोड़ा बुक काफ़ी पुराना है. सो
इसको भी दर्शन कर लूँगा मैं। So right now I am at Murugan Temple, a very famous and old Murugan Temple in Kodai. A nice peaceful place. Murugan is also, we call him Kartikeyan. I think in North they don't know who Murugan is, so he's Kartikeyan. So Lord Kartik. So he's Ganesha's brother. So we have paid visit to the temple. We also made darshan. So from here we'll go to Manonur Lake. So it's raining continuously here. So let's see how it goes. All right, now we'll go to Mannavanur Lake. So another 45 minutes ride from here. So we've reached the Manavanur Lake site. So this is the entrance. You see behind me. So coming in right now. So they charge us rupees 30 for the entry to the eco site. The place is really beautiful, and since it has rained, so it is like lush green here and very beautiful. Oh, I mean, the rain also has stopped, thank goodness. नहीं तो यार बहुत मुश्किल, ऑन द वे रास्ते में तो बस बारिश 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 बारिश. But really nice place, worth visit. So थोड़ा आगे जाके when you walk, then I think you'll find the lake, and there is kayaking as well, there's boating, and let's see, चलते हैं आगे, देखते हैं how it is. So after the entry, you just need to walk for probably like 500 meters, then you'll find the lake. Lake is absolutely beautiful, very nice. So we have a lot of activities going on here. You have kayaking, you have Kodaikanal ride, you have horse riding. So it's a perfect place for a family visit, and also like for college going students as well, they can really enjoy. Very pristine, and not much crowded. I think it's not much explored as well. The crowd is very less. Today being Saturday, a weekend, the crowd is less. I think on a weekday should be much less than this. I think very nice place. I think it is probably one of the best places in Kodaikanal to visit. I think I'll rank it number one. In fact, Kodai Lake, which is very close to the city center, is like generally very crowded there.
This is not much explored because it's like probably around 30 kilometers from the city, so it takes around 1.5 hours. So people generally stick to, you know, going places near the city center. So definitely a must visit place in Kodaikanal. आज है day 3 of the trip. So आज we'll be heading back to Bangalore. और कल ड्यू टू बैड वेदर हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए कोडाईकनाल में. सो जस्ट एक मंडाउलूर लेक गए थे और एक मोहन का टेम्पल. सो प्लान्स तो थे कि और कुछ जाए, बिकॉज वेदर में इतना कंटिन्यूस बारिश था. वी कैन सी मच प्लेसेस. सो आज ऑन रूट टू बैंगलोर विद इन कोडाईकनाल. सो हम कुछ और 2-3 जगह देख लेंगे and then we'll straight go ahead to Bangalore. So that is plan for now. So आज का weather forecast तो clear है. It doesn't show any rain for now, but you know how clear they are. So like I said, कल ड्यू टू रेन ज़्यादा कुछ हम देख नहीं पाए. जस्ट वो मन्नूर लेक गए थे और एक मुर्गन का मंदिर. और सो आज ऑन द वे टू बैंगलोर हम 1-2 जगह देख लेंगे. तो प्लान है अभी कोडाई लेक देखने का और कोकर्स वॉक. सो बोथ ऑफ देम आर राइट एट द सेंटर ऑफ कोडाईकनाल सिटी. और ऑन द वे और एक सीक्रेट हार्ट म्यूज़ियम भी है, तो वो भी देख लूँगा. So right behind me is Kodai Lake, the Kodaikanal Lake, right at the center of Kodaikanal. So we have a lot of activities going on here. We have boating, we have you can hire a cycle. आप साइकिल में लेक का चक्कर मार सकते हैं. There is horse riding और आजू के लेक के आजू बाजू थोड़े गेम्स जैसे बलून शूट करना, थोड़े गेम्स है बाहर. So you can just, it's like as soon as you come to Kodaikanal, I think this is the first place you would want to visit because it's right at the center of the city. और प्लेस थोड़ा क्राउडेड है कंपैरेटिवली. सो बिकॉज आज संडे है मे बी इसलिए, बट इट इज़ काइंड ऑफ क्राउडेड, मोर क्राउडेड टू माई टेस्ट. तो अभी हम हैं कोकर्स पार्क में. दे चार्जेस ₹30 फॉर द एंट्री पर हेड. सो यहाँ 3-4 व्यू पॉइंट्स है. इट इज़ जैसे बोर्ड में मेंशन किया था, सेकंड हाईएस्ट व्यू पॉइंट इन कोडाई. और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ भी बहुत कुछ है. यहाँ शूटिंग है और एक टेलीस्कोप point है जहाँ we can just climb up a small building and you can just have a view of the Kodai city. और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है. It's like the entire mountains are covered with I mean the clouds again. और anyways, it is sunny today than compared to yesterday. It was like कल तो पूरा बारिश था. Today it is sunny. Visibility is better.
So right now in front of Sacred Heart Museum. So let's go in and check out what's inside of the museum, because I've heard quite a few things about it from my friends. So let's go in. So there was a lot going on at the Sacred Heart Museum. It was not dedicated to any particular discipline. You know, there were artifacts from ancient history, like coins, or ancient coins, or biological artifacts bhi the, ancient pottery, you know, all those things. So yeah, if you're with your family, it's definitely a nice place to visit. So अभी हम चलते हैं बैंगलोर की तरफ. So before heading back to Bangalore, one thing I would like to say about Kodaikanal is it is called Princess of Hills for a reason. आपको ज़रूर एक बार यहाँ आना चाहिए.